everyone. Welcome to Learners University. I'm Rupal Kaur Anand, and in today's video we will continue the letters. In previous video we have discussed what are letters, why letters are important. We have discussed two types of letters. Those were formal and informal. Formal letters are written to those which we have like it is a professional letters. It is written to the editor or to the municipal corporation or to employment letter, business letter offer. I will discuss this later because today basically we are going to discuss everything about formal letters, including format and example. But basically the introduction was discussed in the previous video. So the other type of letter were informal. Informal letters are those which are written to our relatives, to family members, basically to express the feeling of gratitude or to express love to our relatives or to the friends or someone we know. It's not professional. In this video, in this formal letter, it is professional, so we follow a particular format. But in informal letter there is no such format. We will discuss this in coming videos. So basically today what we are going to discuss is we will discuss format of formal letter. But before that, let's discuss few types of formal letter. I know that we have already discussed the types of formal letter, but they were limited, and now there are a lot of types, so we are going to discuss it here. The types of formal letter are business letters, official letters, appointment letters. See, business letters are to send to the business partners. Official letters, basically, sometimes the letters came to our houses for electricity bill, or suppose some house tax or some kind of government notice, anything that are informal official letters. Then it's appointment letter. Suppose I want to appoint a teacher, or I want to appoint a writer, a creative writer, content writer. I will send appointment letter. Experience letter, offer letter. Basically offer letter are sent by the employer to the employee related to the job. Social letter, circular letter, leave letter. We send our leave letter. Suppose I need a leave of 4 days for medical purposes, so I will attach my medical file. I will attach my medical reason along with the letter explaining why I need this leave. Resignation letter, invitation letter, and complaint letter. So let's come to the format of formal letter. How formal letter is written? It's like name of the sender. See, if you are a student of 10th class, you will write examination hall. Like if you are a student of 6th to 10th class and you have to give the exam, right? तो हम एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं. अगर आपको सपोज एग्जाम में आप लिख रहे हो लेटर, तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे. बट सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर रियली टू द एडिटर और समथिंग रियली किसी कंपनी को लिख रहे हो या किसी भी प्रोफेशनल चीज के लिए लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे. उसके बाद और ध्यान रखना कि ये स्कूल के लिए और ये ऑफिशियल लाइक रेगुलर पर्पसेस के लिए. देन एड्रेस में आप अगर स्कूल में लिख रहे हो लेटर तो आप कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे. बट यहाँ पे आप अपना एड्रेस मेंशन करोगे. सपोज मैंने मेंशन कर दिया केपी सोसाइटी जो भी है, आई डोंट. फिर उसके बाद आप डेट लिखोगे. यहाँ पे एक लाइन छोड़, यहाँ पे भी आप एक लाइन छोड़ के डेट लिखोगे. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे सपोज 24 अगस्त आपने डेट लिखी. उसके बाद यहाँ पे भी आप डेट लिखोगे ऑब्वियसली. 24 अगस्त पर एक लाइन छोड़ के लिखोगे. उसके बाद नेम ऑफ द रिसिपिएंट. सपोज आई एम राइटिंग टू द एडिटर, तो मैं एडिटर लिख रही हूँ. आप भी एडिटर को लिख रहे हो तो आपने भी द एडिटर लिखा.
दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बिकॉज मोस्टली देखो स्कूल्स के अंदर तो एडिटर वाला ही आता है, कंप्लेंट लेटर आता है या कुछ ऐसा, या प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए आता है, या फिर मोस्टली रिलेटेड टू एडिटर आता है. बट अगर आप उसमें लिख रहे हो बट दिस इज समथिंग ऑफिशियली आपको सीख लाइक लिटरली लेटर लिख रहे हो किसी न्यूज़पेपर को, तो भी आप यहाँ पे लेटर एडिटर लिखोगे. फिर यहाँ पे नेम ऑफ द रिसिपिएंट द एडिटर डेजिग्नेशन एडिटर हो गया. कंपनीज नेम सपोज आप हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हो तो आपने हिंदुस्तान टाइम्स लिखा. सिमिलरली यहाँ भी सेम आएगा. उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में वट एवर द एड्रेस है, सपोज आई हैव रिटन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली. देन इसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, जिसमें आप लिखोगे डियर सर और मैडम. उसके बाद सब्जेक्ट कि वाई यू आर राइटिंग द लेटर, सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर बिकॉज ऑफ ये चीज़ बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ये सिर्फ ये जो नीचे का पार्ट है वो सारा सेम है, चाहे आप स्कूल में लिखो चाहे आप लिटरली एडिटर है किसी को भी लिखो. तो यहाँ पे जब लिखते हो डियर सर और मैडम इन सब्जेक्ट, तो आप सब छोटी ट्राई टू यू नो लाइक ट्राई टू जस्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना, उसको छोटे ब्रीफली लिखना, लाइक ट्राई टू राइट ब्रीफली कि आप किस कंसेप्ट पे लिख रहे हो. सपोज आई एम राइटिंग अ लेटर अबाउट पुअर पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज या पुअर हाइजीन फैसिलिटीज ड्यूरिंग COVID-19. The next is body of letter, जो भी आप लिखोगे लेटर 3 to 4 पैराग्राफ नहीं 2 to 3 पैराग्राफ में हो, जिसमें when you starting a letter you will write through the column of your reputed newspaper. मेरे पास जगह नहीं है तो आई एम जस्ट लिविंग इट. तो अब ऐसे लिखोगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट issue or whatever you want to write. उसके सेकेंड पैराग्राफ में प्रॉपर इशू, आप प्रॉपर इशू मेंशन करेंगे कि जो भी इशू यू वांट टू लाइक whatever the topic you want to write a letter on. Then you will write yours faithfully, yeah, faithfully or sincerely. Oh right, before writing this you will write thank you for your consideration and waiting for your response. Yours faithfully, sincerely, name your name. Basically in school teacher usually mention whatever you are. Suppose the question actually comes like you are Aditi and you have decided to write a letter on this topic whatsoever, मतलब तुम्हारा नाम लिखा हुआ आता है स्कूल में, बट अगर आप लेटर लिख रहे हो एडिटर को लिटरली तो यू कैन मेंशन योर नेम. मूविंग ऑन टू एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का. दिस इज अ क्वेश्चन. Write a letter to the editor of Hindustan Times about increasing too much of homework. So here I have written address. You can write examination hall. उसके बाद I have written this is an address and you won't write this. उसके बाद I have written this is address. Then you can write date, editor, Hindustan Times, its sender's receiver's address. This is sender's address. This is receiver's address. Dear sir, madam, the subject I have just briefly mentioned, overload of homework on students. Through the column of your repeated newspaper, I wish to highlight the topic of overburdened students feel due to the excessive homework. This is like the starting of the like first is just an introduction. Then I mentioned this is where I mentioned the issue. These days, students are overpressured by the abundant homework, and the catch is they have to submit their work before due date. And not only creates anxiety, but also depression. But students have found a remedy.
They just copy and paste everything from Google without understanding or analyzing the topic. And here in the next, it is important to connect students with the real life instead of giving them homework. Give them time to think or do something creative. Now here it is, the last line. See, I mentioned the like remedy here. Ki give them time to think and to be creative. Here is the problem. This is the problem and this is the remedy. Then it is, at last, I want to thank you for your time and concentration. Yours sincerely, Rupal Kaur. Here is an example. So we have discussed an example, and in next class we will be doing most probably format of informal letter. So I hope you have understood this topic. So if you like this video, please share it with your friends and subscribe this our channel, Learners University. And also don't forget to press the bell icon. Thank you and have a nice day.